हाय गाइस, आज हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे लाइक व्हाट इज फ्लूइड्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, their properties and their key concepts. So first of all, what is fluids? Anything which can flow is a fluid, like the things which are not completely rigid. Example plasma, liquid, gases, rubber band, your hand, even a dancing dog is a fluid. So there are two types of fluids, ideal fluid and real fluid. Here the ideal fluid has some properties like no viscosity, incompressible, streamlined flow, irrotational और नॉन टर्बुलेंट फ्लो. मतलब एक फिक्स टाइम टी में एक पर्टिकुलर एरिया से जितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होगा दैट वुड बी कांस्टेंट. एंड फिर रियल फ्लूइड में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है. इट हैज़ विस्कोसिटी, इट इज़ कंप्रेसिबल, it has rotational or turbulent flow, and it also has surface tension. Now, in ideal fluids, we'll learn about hydrostatic fluid and hydrodynamic fluid. पूरे चैप्टर में हमें यही दो चीज़ें पढ़नी है. So, in hydrostatics, we'll mainly learn about hydrostatic pressure and surface tension. And in hydrodynamics, we'll deal with equation of continuity, the most important Bernoullis theorem, and some of its applications. So, quickly, the points to remember in an ideal fluid are: the density of the fluid is constant, it's incompressible, it has streamlined flow or steady flow, there is no rotational effect, and it's non-viscous. In real life, there is no ideal fluid. So those were some basics. Now we'll start with hydrostatic fluid. What is hydrostatic fluid? It's in the name. Fluid जो कि static है, रेस्ट पर है या फिर static equilibrium में है. सबसे पहले हम ये कंटेनर्स के डायग्राम पर आते हैं. यहाँ पे सारे कंटेनर्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखे हैं. नाउ एट हाइट h सारे कंटेनर्स में सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा. फॉर एग्जांपल, अभी सिलेंड्रिकल कंटेनर में पॉइंट A पर कितना प्रेशर होगा? सिंपल है, इट विल बी द प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ वी कैन टेल कि पॉइंट A पर जो प्रेशर है वो चार चीज़ों पर डिपेंड करता है. फर्स्ट, द प्रेशर आउटसाइड द कंटेनर. सेकेंड, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. थर्ड, the height at which the pressure is measured, and fourth, the acceleration due to gravity. Now coming to Pascal's law. What is Pascal's law? Any change in the pressure of the fluid caused internally or externally is uniformly distributed all across the fluid. अब डेफिनेशन तो पता ही होगा. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. इमेजिन कि आपने एक बलून लिया है और उसको लेफ्ट साइड से पंच किया है. सो बिकॉज ऑफ द पंच द इंटरनल प्रेशर चेंजेस एंड द चेंज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ऐसा नहीं होगा कि आपने लेफ्ट से पंच किया है और सिर्फ राइट पार्ट बाहर आया. द होल बलून एक्सपांड्स इवनली. नाउ कमिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज दैट द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर अ स्टेडी फ्लो इज द सेम थ्रू आउट द फ्लो. अब इसका मतलब क्या है? फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ. आपने देखा ही होगा कि जब हम पाइप से गार्डन में पानी मारते हैं तब पाइप के ओपनिंग पर फिंगर रखने से पानी का फोर्स बढ़ जाता है और पानी ज़्यादा दूर तक जाता है क्योंकि पाइप के ओपनिंग का एरिया कम हो जाता है. वही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. F1A2 इक्वल टू F2A1. बिकॉज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, द पार्टिकल्स मूव फास्टर थ्रू अ नैरो सेक्शन एंड द स्लो डाउन while moving through a wider section. Now let's start with pressure in detail. Pressure. It's the component of force perpendicular to the surface area divided by the surface area on which the force is applied. अब सिंपल वर्ड्स में प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. एरिया कौन सा होगा? जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं. और जैसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो पूरा प्रेशर क्रिएट करेगा. नहीं, बस वही फोर्स प्रेशर क्रिएट करेगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है. नाउ हाउ डू वी मेजर प्रेशर? पहला है बैरोमीटर. इसमें एक कंटेनर होता है फिल्ड विथ मर्क्यूरी. अब इसमें एक क्लोज इन्वर्टेड कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके अंदर मर्क्यूरी राइज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर. इसमें भी वही कंसेप्ट लगता है जो हमने कंटेनर्स के केस में लगाया था. नाउ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH. अब कैपिलरी के अंदर सिर्फ मर्क्यूरी और वैक्यूम ही है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे अफेक्ट नहीं करता है. सो P0 is equal to 0 because pressure due to vacuum is always 0. Therefore, pressure at the bottom of the barometer is rho GH only. Second है manometer. Here there is a tube filled with gas and mercury as shown in the diagram. अब हमें इसमें pressure due to gas find करना होता है at point A.
सो जैसे कि हमें पता है कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल pressure due to a fluid is same. So now pressure at point A is equal to pressure at point B. और फिर से वही कहानी. To find the pressure at point B, we'll apply the formula P naught plus rho GH is equal to pressure at point B. Now we are going to start with a very important topic, surface tension. In simple words, it's a property of ideal fluid because of which surface of a liquid behaves like a stretched membrane which tries to minimize its surface area. This is why when you spill a drop of a liquid or blow a soap bubble, the liquid takes a spherical shape and not cube, cylindrical or pyramidal shape. The molecules on the surface of liquid experience unbalanced forces, while the molecules in the bulk have forces balanced or nullified from all the sides. For the surface molecules, the forces are balanced only by the molecules below them, so they are stretched downwards, creating a meniscus. Simply, when everything is balanced, there is no tension. If there are unbalanced forces, they create a tension. अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है उसे ही हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, कोहेसिव और अधेसिव. कोहेसिव फोर्स क्या होता है? यह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस या सेम मटेरियल. अधेसिव इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है. दिस इज मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट मटेरियल. अब नेक्स्ट टर्म है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब ये क्या है? सिंपल, इट्स द मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव होते हैं. नेक्स्ट है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ये एक इमेजिनरी स्फीयर होता है जिसमें मॉलिक्यूल स्फीयर के सेंटर पर होता है और मॉलिक्यूल का रेंज उस स्फीयर का रेडियस होता है. अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं सरफेस एनर्जी. जैसे कि हमें पता है सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस को मिनिमाइज करता है. सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया we need to do some work against the force of surface tension. So, as we know, the surface acts like a stretched membrane. Therefore, it has stored potential energy. So, this additional potential energy stored per unit area of the surface is called surface energy. अब देखते हैं angle of contact. अब the angle of contact between the tangent to the liquid surface drawn at the point of contact and the solid surface inside the liquid is called angle of contact. अब ये क्या है? यहाँ जो मॉलिक्यूल और सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं टू द लिक्विड सरफेस. अब ये हमें डायग्राम से ही समझ आएगा. इसमें दो एंगल होते हैं, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस या कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स रिस्पेक्टिवली. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक टैंजेंट ड्रॉ किया है and the angle between the surface and the tangent is called the angle of contact. अब देखते हैं factors affecting angle of contact. First, type of solid and liquid in contact. As you know, different liquid have different densities and hence they make different angle of contact with different surfaces. Second, impurities change the surface tension, hence changing the angle. Simple. Up third, temperature of liquid. If temperature increases, angle of contact decreases and vice versa. अब टेम्परेचर से डेंसिटी चेंज होगी एंड हेंस डेंसिटी की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होगा ही. अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन. फर्स्ट, टेम्परेचर. सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर. जैसे कि हमने देखा, डेंसिटी और सरफेस टेंशन दोनों ही चेंज होते हैं विथ चेंज इन टेम्परेचर. सेकेंड, impurities. For highly soluble impurities, surface tension increases. Example, NaCl, ZnSO4. For sparingly soluble impurities like phenol or soap, surface tension decreases. Now coming to excess pressure due to surface tension. यहाँ पर आपको ये फैक्ट्स या फॉर्मूलाज याद ही करने होंगे. एग्जाम में इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो और आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाएगा. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट याद रखना है, दैट इज इफ
one drop is broken into number of droplets, then its total surface area increases, the surface energy increases, but the temperature decreases and the energy is absorbed. Now coming to the second part of the chapter, hydrodynamics. Here we'll study properties of moving fluids. पहले हम कुछ terms देख लेते हैं. First, critical velocity. A velocity beyond which streamlined flow becomes turbulent flow. मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद फ्लूइड रोटेशनल बिहेवियर शो करता है और एक आइडियल फ्लूइड नहीं रहता. इट बिकम्स अ रियल फ्लूइड. द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इज रेनॉल्ड्स नंबर Rn into coefficient of viscosity eta whole divided by density of fluid into diameter of pipe d. अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर is a pure number. It has no unit and dimensions. It is found that for Rn Reynolds number less than 1000, the flow of a fluid is streamlined, while for Reynolds number greater than 2000, the flow of fluid is turbulent. That is, it becomes a real fluid. Now coming to viscosity. It is a property of real fluid due to which a layer of liquid opposes relative motion between the adjacent layer of fluids, which is viscous force per unit area. Viscous force is proportional to the area of cross-section or contact. It is also proportional to del V by del X, which is velocity gradient or velocity per unit length, and the proportionality constant is coefficient of viscosity. The formula for viscosity is negative of eta into area of cross-section into del V by del X, which is velocity gradient. Now coming to Stokes' law. For a small sphere moving through a viscous fluid, the viscous force at any moment is proportional to the radius of the sphere and the speed of the sphere, and the direction of viscous force is always opposite to the velocity of the sphere. Formula for viscous force is negative of 6 into pi into eta, that is coefficient of viscosity, into r radius of sphere into v velocity of the sphere. Now coming to an important part, Bernoullis equation. The speed of a fluid in a narrow region increases, but the internal pressure of a fluid in the same narrow region decreases. Here, the work done per unit volume of a fluid by the surrounding fluid is equal to the sum of the changes in the kinetic and potential energies per unit volume that occur during the flow of the fluid. This is based on the work energy conservation theorem. The formula for Bernoullis equation is P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. As we are doing quick revision, so we are not doing the whole derivation. So let's go to the application of Bernoullis equation. So the first is efflux. The outflow of any liquid stream is called efflux. Example, when water comes out from a hole in the bottle, the jet stream of water is called the efflux. Here we use Bernoullis equation in finding the velocity of efflux, that is under root 2 gh. Here h is the height of the hole or the orifice from the surface of the bottle. The second is Venturi tube. The tube is shown in the diagram. The Venturi tube is used to measure the speed of flow of a fluid in the tube. There are various industrial applications of Venturi tube. Its formula is 2gh equal to v1 square minus v2 square. Here h is equal to difference in the heights of the water column in the two tubes. So here we are done with our quick theory revision. Hope you understand. So see you guys in the next video. That's all for today. Keep learning and bye bye.